Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the infection cycle of HIV. So let's move to the classboard. So dear students, infection cycle of HIV. An important topic. आमतौर पर बोर्ड एग्जाम्स में इसका ये जो हम इन्फेक्शन साइकिल ड्रॉ करने लगे हैं पेज नंबर 79 के ऊपर गिवन है। इसका जो स्केच है ये पूछा जाता है 4 मार्क्स का। इन्फेक्शन साइकिल of HIV. So what is HIV, dear students? Human immunodeficiency virus. So इस पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से HIV जो है वो इन्फेक्ट करता है सेल्स को हमारे। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपसे लास्ट लेक्चर में एक बात की थी आपसे कि कुछ सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये उनके ऊपर जाकर डायरेक्टली अटैक करता है, खासतौर पर मोनोसाइट्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंटली द टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंटली द टी हेल्पर सेल्स। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली इसके जो से अटैचमेंट साइट्स है, जो इसकी जो स्पाइक जो एनवेलप प्रोटीन्स होती हैं, जो ये पूरा यानी कि जो वायरियन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका, दैट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब और अटैच ऑन अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर के बगैर अटैच नहीं हो सकता। ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। क्लियर? HIV इज अ होस्ट स्पेसिफिक। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रॉम हियर सो दिस इज अ टी हेल्पर सेल। ठीक है, यहां से हम जिसकी हमने बात की थी, द मेन कंडक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। So this is basically HIV, जो कि अटैच हो चुका है इस वक्त टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स के ऊपर। क्लियर? So let's mark it. So this is the CD4 receptor on helper T cell. ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड कर चुका है HIV. So these are the envelope spikes. Yeah, and that is the capsid, the protein coat of HIV, and here are the 2 strands of RNA. Remember one thing, ठीक है, यहाँ पर 2 strands हैं single stranded RNA की, so that is RNA, और कितने strands? 2 strands are there, and over here this is a reverse
transcriptase enzyme So this is basically the T helper cell. Clear? ये जो हम draw कर रहे हैं, that is a T helper cell. So it gets attached. The first step is over here. The first step is adsorption, means attachment, penetration, and uncoiling or uncoating. Clear? So this is the first step in the infection cycle of HIV. So what happens? The virion. तो dear students, virion किसे कहते हैं? ये short question आपसे पूछा जा सकता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. The complete mature infectious virus is known as virion. Clear? So the virion attaches to CD4 receptor. अच्छा dear student, ये CD4 क्या है? This CD4 stands for cluster of differentiation. ये बेसिकली रिसेप्टर है, ठीक है, CD4 रिसेप्टर है और इसके ऊपर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इसका जो नाम दिया जाता है और इसको 4 जो इट इज में जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सो द virion attached to the CD4 receptor on T helper cell. After entering the cell, uncoating takes place in cytoplasm. ये MCQ के लिए मार्क कर लें कि इसकी अनकोटिंग कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर. Okay? So this was the first step. अच्छा, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना. जो बैक्टीरियोफेजेस हमने पढ़ा था, जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, वो कंप्लीटली नहीं जा सकते सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं जाते. आपने देखा था उसके लाइफ साइकिल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है. जबकि मैंने बताया था कि बहुत सारे एनिमल और प्लांट वायरसेस वो मुकम्मल तौर पर सेल के अंदर जा सकते हैं. सो HIV इज अमंग देम. तो ये चूँकि एनिमल सेल है, ठीक है, जैसे T हेल्पर सेल, तो ये इसके अंदर मुकम्मल तौर पर पेनिट्रेट करेगा. पहले एंटर होगा, पहले रिसेप्टर पर अटैच हुआ, फिर सेल के अंदर आया, अंदर आकर इसकी अनकोटिंग होगी. क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग. नाउ व्हाट हैपन्स, ये इसकी जो अंदर आने के बाद इसकी जो सी ये so these are the proteins and RNA, viral RNA. clear? तो ये अंदर एंटर हो चुका, ठीक है. so this is viral RNA. Now what happens next? So here are two strands of वायरल RNA. क्लियर? अब इनमें से एक वायरल स्ट्रैंड जो है, वायरल RNA की स्ट्रैंड, उसको रिवर्स ट्रांसक्राइब करेगा द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो यहाँ पर मौजूद है ये वायरल RNA, इसको इस्तेमाल करेगा एज अ टेम्पलेट और फिर इससे बनवाएगा
आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब एक स्ट्रैंड तो वायरल आरएनए की ओरिजिनल, इसी को इस्तेमाल करते हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनवाएगा दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड इस तरह से, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स नाउ, अब ये डीएनए की जो सी नई स्ट्रैंड बनी है इसको एज अ टेम्पलेट लेगा और इससे डीएनए डबल हेलिक्स प्योर डीएनए बनवा लेगा। तो ये पहले वाली टेम्पलेट और अब इसने ये बनवा ली न्यू वन। क्लियर? सो नाउ दिस enters into the nucleus. This will enter into the, this is the nucleus of the T helper cell. और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? There is chromosomal DNA. There is chromosomal DNA और उसके साथ अटैच करते हैं, अटैच हो जाता है ये वायरल डीएनए। अब यहाँ से चूंकि ग्रीन कलर में हमने बनाया तो ये यहीं से मैं शो करूँगा आगे क्या बनवाएगा, आरएनए। सो दैट इज द सेकेंड स्टेप। और फिर ये आरएनए क्या करवाएगा आगे चलकर, इट विल मेक द प्रोटीन्स एंड वायरल प्रोटीन बनवाई जाएंगी इससे। और viral RNA like this. So the second point is the second step. यहाँ पर पहले इसको मैं लेबल कर लूँ. This is viral RNA. This one, and this is RNA DNA hybrid, and this is complete pure DNA जो कि इसी सेल की न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बनाएगा डबल हेलिक्स. क्लियर? और दिस वन इज द क्रोमोसोमल डीएनए, and this is the provirus. This is provirus. Clear? और यहाँ से क्या बनवाया गया? This is RNA और ये सारे इसके viral proteins. So now the second step is over here. So in the second step, there is a reverse transcription and integration. So that is the second step. That one is the second step. इसको भी हम बॉक्स का लेते हैं ताकि स्टेप्स की शक्ल में अलग से दिखाई दे. So what happens in the step? The reverse transcriptase enzyme uses viral RNA as a template and makes a strand of DNA.
Clear? Then uses, हम किसकी बात करें? Reverse transcriptase की. Then uses the DNA strand as a template. टेम्पलेट कहते हैं सांचे को, यानी कि जिसके ऊपर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप जिसके ऊपर वो पहले से जिसको देखकर आपने नेक्स्ट आगे सिंथेसिस करवानी है. सो टेम्पलेट. सो अब ये डीएनए को एज ए टेम्पलेट लेगा एंड फॉर्म्स प्योर डीएनए डबल हेलिक्स. और इसी दौरान द ओरिजिनल viral RNA is degraded. उसको डिग्रेड कर दिया जाता है. ठीक है, जो ये असल स्ट्रैंड थी, अब यहाँ पर देखें आपको ब्लू वाली स्ट्रैंड नजर नहीं आ रही. सो इट इज डिग्रेडेड. नाउ व्हाट हैपन्स? द डीएनए enters the nucleus. Let me label it. This is nucleus, and this is basically T helper cell. Yeah. So this is a T helper cell, जिसका nucleus. So the DNA enters into nucleus and becomes integrated and becomes integrated into chromosomal DNA, chromosomal DNA and becomes provirus. Becomes provirus. Now what happens? The proviral DNA this is proviral DNA. क्लियर? ये प्रोवायरस है जिसके साथ इंटेग्रेट हो चुका है. अब ये जो प्रोवायरल डीएनए ये इंटेग्रेट हो, ये बेसिकली ट्रांसक्राइब होगा. द प्रोवायरल डीएनए is transcribed into RNA, which is translated into proteins. Clear? So this is what happens over here. और यहाँ पर here is transcription. Yeah. And here is the third step. So first, second, and now the third step is over here. That is viral RNA and protein synthesis.
So that's it. That is basically the third step. So in the step, so this transcribed viral बल्कि प्रोवायरल, ठीक है, RNA is translated to make viral RNA and proteins. तो उससे प्रोटीन्स बनवा दी जाएंगी. ये वायरल प्रोटीन्स हैं और ये वायरल RNA. Clear? And in the last step, the fourth step is assembly and release. Assembly and release. So what happens in the final step? The viral proteins assemble around viral RNA to make capsids and these capsids bud from the plasma membrane. And ready to infect another cell. Clear? So what will happen over here now? So here the capsids start forming. Clear? And here is another capsid. So these are viral RNA strands, reverse transcriptase and the capsid. और यहाँ पर इसके बन रहे हैं spikes. So it is going to bud off. और यहाँ पर इसकी बर्डिंग हो चुकी है, यहाँ पर असेंबली हुई और यहाँ पर over here it is released. Now it has been released. So this is budding and this is release. So over here, so here is translation. Translation हमेशा यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में it occurs in the cytoplasm. तो यहाँ से ये RNA साइटोप्लाज्म में आएगा और इसकी जो प्रोटीन्स और वायरल RNA उसको सिंथेसाइज करवाया जाएगा. So this is how the life cycle of this is the infection cycle of HIV. ये इसने इन्फेक्ट किया. हमने से प्रीवियस लेक्चर में बात की थी डियर स्टूडेंट्स कि ये खतरनाक इसलिए, इट इज़ डेंजरस बिकॉज
ना सिर्फ इसने होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया, इसको तो इन्फेक्ट किया, अब यहाँ से ये इन्फेक्ट करने के बाद ये फिर निकल गया, इसने अपने न्यू जो है वो पार्टिकल्स बनवा लिए और इट इज़ रेडी टू इन्फेक्ट अनदर सेल। एक तो ये काम तो किया इसने, ये तो तबाही फेरी इसने, ये तो डिस्ट्रक्शन की इसने, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखें अब ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रो वायरस के तौर पर रहेगा। जिस तरह वो प्रोफेज था, ठीक है, लाइसोजानी में रहता था, यहाँ पर ये प्रो वायरस के तौर पर रहेगा। और जैसे जैसे ये सेल जो है ये मज़ीद आगे डिवाइड होते चले जाएंगे तो इनकमिंग सेल्स के अंदर ये एज इट इज़ प्रो वायरस रहेगा और अपने पार्टिकल्स को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करवाने के बाद बनवाता रहेगा नए HIV जो वायरसेस हैं। क्लियर? So dear students, let's have a review about this infection cycle. So here is this is ये complete जो हमने ये बड़ा सा जो बॉक्स नज़र आ रहा है, that is the T helper cell. T helper cell क्या है? ये T lymphocytes की एक किस्म है और T lymphocytes क्या हैं? They are the type of lymphocytes और lymphocytes क्या हैं? They are the type of A granulocytes और A granulocytes क्या हैं? They are the type of leukocytes. तो हम इससे previously डिस्कस कर चुके हैं. So T helper cell ये इसका न्यूक्लियस, तो यहाँ पर इसके ऊपर मौजूद हैं CD4 रिसेप्टर, ठीक है, और इसके जो स्पाइक्स हैं ये दिस इज बेसिकली HIV, ये आकर उस रिसेप्टर पे अटैच होगा। सो फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन एंड अनकॉइलिंग। अटैच हुआ, उसके बाद इसने अपना जो कैप्सिड था उसको अंडर पेनिट्रेट किया साइटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ पर इसकी अनकॉइलिंग हुई, अनकोटिंग हुई और ये देखें इसके स्पाइक्स बिखर चुके हैं और ये साथ में इसके ये वायरल RNA के स्ट्रैंड्स। और याद रखिएगा कि वायरल RNA जो है ये कितने हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं इसकी, क्लियर, और साथ में 2 ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स मौजूद हैं। तो नाउ व्हाट हैपन्स, ये 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड को उठाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, तो वो क्या करवाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बताया था आपको कि RNA से DNA बनवाना। तो अब ये क्या करेगा कि इसको एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड लेगा इस वायरल RNA को और इससे बनवाएगा दूसरी नई स्ट्रैंड इस सेल से इस्तेमाल करके, सेल की न्यूक्लियोटाइड से लेकर के, तो यहाँ से बनवाएगा एक और नई स्ट्रैंड DNA की। सो इट बिकम्स दिस, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो अब चूंकि इसमें एक ओरिजिनल RNA स्ट्रैंड है और एक जो इस सेल से बनी हुई स्ट्रैंड है, सो इट बिकम्स RNA DNA हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं, 2 मुख्तलिफ चीज़ों का जो अमेलगम होता है उसे कहते हैं हाइब्रिड। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा कि जो ओरिजिनल DNA और RNA की स्ट्रैंड थी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको डिग्रेड करवा देगा और अब इस स्ट्रैंड को जो न्यू बनवाई थी DNA की, इसको इस्तेमाल करेगा एज अ टेम्पलेट और फिर इससे एक और DNA की स्ट्रैंड बनवा के इसको डबल हेलिकल DNA बनवा देगा। अब ये DNA क्या करेगा, इट मूव्स इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जाकर क्रोमोसोमल DNA के साथ अटैच हो जाएगा, इंटेग्रेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जैसे ये इनकॉर्पोरेट होगा, नाउ इट इज कॉल्ड एज प्रोवायरस। प्रोवायरस, क्लियर? सो प्रोवायरस और प्रोफेज में डिफरेंस याद रखिएगा, इसको क्लैरिफाई रखिएगा। अब क्या होगा कि जो प्रोवायरल DNA, ये आंसर, दिस इज प्रोवायरल DNA, ये नीचे क्रोमोसोमल DNA है, तो ये इसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उससे बनेगा RNA और RNA जो है ये इसकी होगी ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, तो उससे क्या बनेगी, इसकी वायरल प्रोटीन्स बनेंगी और वायरल RNA बनवाया जाएगा। सो दैट इज द थर्ड स्टेप, वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर? और फिर उसके बाद फाइनली जो कैप्सिड है वो इनके गिर्द बनेंगे, जो वायरल RNA इसके गिर्द वो कैप्सिड बनना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स, जिनसे वायरल प्रोटीन्स ही असेंबल होंगी इसके इर्द गिर्द। ये देखें वायरल RNA और इसके इर्द गिर्द कैप्सिड बना। नाउ इट इज़ रेडी टू बड ऑफ, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा, फ्यूज़ करके निकल जाएगा एंड इट इज़ बडेड ऑफ और ये रेडी है एक नए T हेल्पर सेल को या दूसरे किसी ल्यूकोसाइट को लाइक द मोनोसाइट उसको अटैक करने के लिए, उसके ऊपर अपना कमांड हासिल करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हेपेटाइटिस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।